Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing about direct and indirect narration. So let's start. So basically, the rules are, first of all, when a question with why, what, or how is to be changed into the indirect speech, then the verb of the reporting speech is replaced by inquired, demanded, or asked, and the conjunction that is not used. The question changes into the statement. अब यहाँ पर आपको समझ आ गई. पहले स्टार्ट में आपको बताया था ना कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जो है ना वो दैट से कनेक्ट करना होता है, एक्सेप्ट फॉर द सर्टन केसेस. वो सर्टन केस ये वाला है कि जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको अपने इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो वर्ड्स यूज करने हैं, इंक्वायर्ड, डिमांडेड और आस्क्ड वगैरह. ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो इसका इंडायरेक्ट होगा आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेक्स्ट प्लान. इसी तरह when the question is beginning with the auxiliary verbs are to be changed into the indirect speech if or whether is used to join the reporting speech and the reported speech, and the question is converted into statement. इस चीज को समझने के लिए पहले आप डायरेक्ट वर्जन देखें. He said to the teacher, do you think my essay is good? तो इसका इंडायरेक्ट होगा he asked the teacher if he thought his essay was good. Commands and requests. ठीक है, तो indirect speech commands and requests are introduced with an infinitive and the reporting verb. ठीक है, बेसिकली आपने बताना है कि डायरेक्ट स्पीच में जब आपका कमांड्स या रिक्वेस्ट जो है ना इंट्रोड्यूस हो रही होती है इन्फिनेटिव से, और रिपोर्टिंग वर्ब को आपने रिप्लेस करना होता है बाय टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा. मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो ये वर्ड्स ऐड करेंगे टोल्ड, ऑर्डर्ड, commanded, requested according to the sense of the sentence. For example, direct version है he said to his servant, fetch me a glass of water. तो indirect version होगा he ordered his servants to fetch him a glass of water. Direct होगा I said to him, please sit down. Indirect होगा I requested him to sit down. Desires and exclamations. When desires and exclamations are basically changed into indirect speech, then the reporting verb is replaced by wished, desired, exclaimed, cried, and that is used as conjunction to join the reporting and the reported speech. तो जब भी desires and exclamations आती हैं तो आपने ये वाले words use करने हैं, exclaimed, cried, desired, wished वगैरह. ठीक है, एग्जाम्पल है डायरेक्ट है कि that he said alas I have done what cannot be undone. Indirect होगा he exclaimed with sorrow that he had done what could not be undone. तो change of the demonstrative pronouns या adjectives, ये लास्ट चीज आपने ध्यान में रखनी है. The words showing nearness in their time and space are changed to the words showing distance unless the sense requires otherwise. ठीक है, डायरेक्ट है he said I wandered here and there. Indirect है we cannot replace here by. ठीक है, so this is all for today. Thank you so much.